Ma'am, a lady of such repute, I think I would like to know something right from the horse's mouth. Females entering this industry are always terrified of a certain word called as a casting couch. Does it really exist? And if it exists, how can it be avoided? If I have a sister, if I have a daughter who would like to enter the industry, then how can she escape through or come out of it, come out successfully without going through that? Okay. One, tell me which industry doesn't have a casting couch? Oh, really? Yeah, that's true. That's very true. So, I mean, let's face it. Every person, especially not only in India, even out of India, there is something known as a couch. Okay. But we, in India, it's called a casting couch. So, I mean, because it's more relevant to the film line. But Okay. it's otherwise there is a couch. In every industry, if you want to climb up, you need to go through a couch, which is actually not the fact. And whoever goes that way is always doomed to fall dead. Okay. You have to remember one thing. You know, having shortcuts is very easy. But you know, Pitfalls. it's like a snake and ladder. Yeah. You climb like a ladder up, and the same snake will bite you when you're down. Bring you down. जैसा कि जैनेट मैम ने कहा है, अगर आप एक्टर बनना चाहते हो, नो शॉर्टकट्स, ओनली टैलेंट मैटर्स. और अगर आप में टैलेंट है, देन ओनली ऑडिशन मैटर्स. I know so many people who've gone through this because it was their will. Okay. Nobody is, I should tell you, nobody's forced for it. Okay. And today I'm in this industry. You have been here, Vipulji. Bilkul. I have been in this industry. We have not done any casting couch. Definitely. Neither we have been a part of it, neither we have been in it. So we are all clean people. And we have come this way and successfully. Beautiful. And I know a hell lot of people who are successful in this industry without adhering to the casting couch. So basically, there is nothing known as a casting couch. The only thing is, it depends on you. If you want a shortcut, you want to drive up, you will drive up. But trust me, you will come down the ladder very soon. Because there is no other option other than hard work and no shortcuts in any line, not just in this film line. So दोस्तों ये बात ध्यान से रहे, हम उंगली उठाते हैं इंडस्ट्री की तरफ, बट कहीं ना कहीं ताली दो हाथों से बजती है. जब तक आपकी मर्जी ना हो तो कोई आप पर कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता. तो कल अगर आप किसी पे इल्जाम लगाए तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद है. इंडस्ट्री को बदनाम ना करें. जी. जानेट मैडम, अभी एक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो जाएगा. इंडस्ट्री के सही लोग में मैंने खास इस चीज पे ध्यान दिया है कि कोई आर्टिस्ट कार्ड ना मांगे, कोई पेड कास्टिंग ना करे, कोई कॉम्प्रोमाइज की बात ना करे, और द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, रजिस्ट्रेशन चार्जेस. आजकल इट हैज बिकम अ फैशन. एवरी टॉम डिक एंड हैरी इज चार्जिंग रजिस्ट्रेशन चार्जेस, एंड आपने पैसे दे दिए एंड ही ब्लॉक्स योर नंबर. But as far as my knowledge goes, I think you are the pioneer in registration charges. और of course आपकी तो शिकायत है ही नहीं क्योंकि मैंने खुद ने registration charges भरे हुए हैं. You have been giving us work constantly. You don't take commission. So your registration charges are justified. That's why in spite of that you are here, because you are an honor to be here for me. Okay. But I would like to know from your mouth, I would like the audience to know from you, why are you charging that registration? आपने जो website के लिए जो web page. Yeah. Yes, I would. Okay. Two things. When I started off individually, that was a decade back, almost 10 to 12 years, as Janet's Casting Hub. Previous that I was Janet Casting Director. Now also I'm Janet Casting Director, but I have a company which is Janet Casting Hub LLP, and I have a team of almost 11 people who are very efficient and who are very old, been working with me for a long time. This is a nice question regarding registration. You know, when I started off, I was the person who came up with this name, Janet Casting Hub. Today, every single person seems to have an hub. They, you know, I mean, that's quite shocking. Every ex-person seems to be having some casting hub. That's one. And registration. When I started registration, it was nobody's idea again.
Because I remember that when I started off, it was mainly because I was in a position when my producers told me, Janet, we don't have a place right now. You can move out, take up other shows, but we can't afford to give you money for the place and for the other things. That will be your headache. So, but you can take up shows outside. Though I was getting a lot of shows outside and I did take it, I realized that things were going on digitally, and when you have to go for a YouTube, like I used to have auditions like 50 to 80 auditions to 100 auditions a day. There's be a line in my office where I used to have auditions. Now, if I have to upload 100 auditions, there's a limitation for YouTube where they will not let you put as many auditions you want. We can calculate one person into so many auditions required, and for me to work on like a emotional audition, positive audition, a mythological audition, historical audition, a different type of auditions that I need. So it was very difficult for us to handle this. That's when we got up into a plan where we spoke to some people and we purchased a space, the web page. That's why I call it not a registration. It is not a registration, Vipulji. It is a web page registration where you get your web page, where in that web page you can put your photographs, you can put your auditions, as many auditions you want. What is that for 1,000? We can access it, the casting team can access it, the producers can access it, the creatives can access it, channel guys can access it, only obviously after they get the login. So basically, you cannot log in anybody else. We, our team, from the internal can, but you cannot access auditions of any other actors till you have you get his password, because we give a password and identification and password has been given to you, where you have to use it for yourself. You can use this webpage for sending it to other people as well. Now, since I have a lot Ma'am, I'll just break in. I would like to stress this point to the viewers once again. तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी बात है. इंडस्ट्री के सही लोग में हम रजिस्ट्रेशन वाले लोगों को नहीं लेते, फिर भी जैनेट मैडम को क्यों बुलाया? जो उन्होंने बताया, जो कि मैंने भी गलत बोला था, इट्स नॉट रजिस्ट्रेशन, इट इज वेब पेज रजिस्ट्रेशन. वेब पेज रजिस्ट्रेशन, जहां पर आपका जो प्रोफाइल है, आपके वीडियोस है, उधर अपलोड किए जाते हैं, आपके पास उसका पासवर्ड भी है, और आप जितने चाहे उतने वीडियोस उधर अपलोड कर सकते हो. और आपके वीडियोस प्रोड्यूसर्स देखेंगे, कास्टिंग डायरेक्टर्स देखेंगे, जैनेट मैम देखेगी. तो इसके लिए 1000 रुपये कौन सी बड़ी चीज है? ये 10,000 20,000 ऐसी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है. और ये आपसे कास्टिंग का काम होने के बाद आपसे कमीशन भी नहीं ले रही है. सो 1000 रुपीज इज वेब पेज रजिस्ट्रेशन. बिकॉज आई डोंट वांट समबडी टू आस्क मी कि सर आप रजिस्ट्रेशन के खिलाफ है, फिर आपने जैनेट मैम का. बिकॉज जैनेट मैम, एज आई सेड, शी इज अ पायनियर. उन्होंने शुरुआत की है, पर उन्होंने एक अच्छी सोच के साथ शुरुआत की है. उनके बाद जो फॉलोअर्स है वो सब तो आपको पता है, मैं उनके लिए क्या बोलूं. बट रजिस्ट्रेशन की अगर जेन्युइन एंड वन एंड ओनली जेन्युइन पर्सन जैनेट मैम. प्लीज कंटिन्यू. सॉरी टू डिस्टर्ब यू. नो, आई रियली अप्रिशिएट दैट. दोस्तों, एक राज की बात बताओ. कास्टिंग डायरेक्टर के बारे में तो आप जानते ही हैं, किसी ना किसी प्रोडक्शन हाउस के साथ जुड़े हुए हैं. हमारे जैनेट मैम जो है ना, प्रोडक्शन हाउसेस के अलावा कई सारे चैनल्स के साथ भी जुड़े हुए हैं. एम आई राइट जैनेट मैम? या. तो मैम, अभी मैं चाहता हूं कि आपका जो वेब पेज रजिस्ट्रेशन है उसके बारे में थोड़ा विस्तार से आप हमारे दर्शकों को समझाएं. ठीक है. सो विपुल जी, वेब पेज रजिस्ट्रेशन मेरा सिंपल पैसा लेकर रजिस्ट्रेशन वाला नहीं है. ये हम वेब पेज रजिस्टर करते हैं, आपको एक वेब पेज देते हैं, उसमें आप आपके पिक्चर्स डाल सकते हैं, आपके पूरे डिटेल्स, कभी आप आपका हाइट हो, योर डिटेल्स, एवरी डिटेल्स यू कैन ऐड. आपने आज भरतनाट्यम सीख लिया तो उसमें आप भरतनाट्यम लिख सकते हो. आपने कुंग-फू कराटे सीख लिया तो आप वो ऐड, आपका स्पेशलिटीज ऐड कर सकते हो. आज आपने कार ड्राइव करने सीखे हो या आप कुछ लैंग्वेज सीख चुके हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हो. You can your profile, your datas, your photographs, your portfolios, your auditions, n number of auditions. There is no limitations. Wow. Sad auditions ho, aapka happy emotions, different emotions, yeah, and every different auditions. It's a rich collection that I can make of myself. So because right. काफी लोग मतलब a lot of people make use of it, जिनको काम भी मिल रहा है. कोई डॉक्टर का डालता है, कोई लॉयर का डालता है, वेरिएशंस. कोई एंगर का डालता है, कोई इमोशनल डालता है, कुछ थिएटर का डालता है. सो बेसिकली द मोर ऑडिशंस आप लोग डालोगे उतना काम आपको मिलेगा, कि उतना आपका
ऑडिशंस एक्सेस होता है टू द प्रोड्यूसर्स, टू द क्रिएटिव्स, टू द चैनल गाइज, टू द कास्टिंग टीम, कास्टिंग टीम. Yes, एक बात जरूर है कि since I have a lot of known faces and a lot of big people on my web page also, who don't cry for the registration because they know it's genuine. What happens is we do not share anybody's profile. Like आपका profile किसी और को दिखेगा नहीं, and किसी और को नहीं दिखेगा. It's a ID which you all have, you can use. And but we from our end, for the producers and the channel and the creatives and the casting team, we have another login where they can have a look at all those profiles. Okay. Now yes, also मेरी दूसरी बात है कि जो auditions हम यहाँ पे करते हैं, certain auditions are hold back and are not put on the web page to access to the actors also, उनका ही auditions. और इसलिए क्योंकि मेरी कॉन्ट्रैक्ट्स होती है चैनलों के साथ, प्रोडक्शन हाउसेस के साथ, तो वो हम लोग उनको लीक नहीं कर सकते. सो सिंस आई कांट लीक दोज ऑडिशंस बिकॉज मालूम पड़ा कि यहाँ पे ऑडिशन दिया, वो सब जगह घूम रहा है और यहाँ पे कास्टिंग करना बाकी है. सो वो हम लोग अलाउ नहीं करते हैं. एंड आई डोंट टेक कमीशंस. वी डू नॉट बिलीव इन कमीशंस एंड वी डू नॉट टेक कमीशंस. तो द बेसिक आइडिया इज कि आई गेट सैलरीज फ्रॉम द प्रोडक्शन हाउसेज, और जहाँ मैं काम करती हूँ I get salaries. So I am very clearly a casting director and we are not coordinators or freelancers. We take the work from the production houses and from the producers. We cast the actors. Now since we don't take commissions, हमें बहुत मुश्किल होता है वेब पेज का रजिस्ट्रेशन भरने के लिए, क्योंकि I have to pay a accommodated amount to the web page guys to upload and keep it running. So that is why it's very simple. And yes, Subal ji, I should tell you this. Supposing आपने register किया हमारे साथ, और God forbid हमने एक साल आपको काम नहीं दे पाए, हम आपको re-registration नहीं करवाते. Okay. कब तक नहीं करवाते? जब तक हम आपको काम दे पाए. Okay. वो इसलिए क्योंकि I believe that we have to be honest. वो एक एक्टर का 1000 रुपए लेकर उसको काम नहीं दे पाए. मेरे पास ऐसे भी एक्टर्स हैं जो 2-3 साल काम नहीं कर चुके for whatever reasons, and yet उनका हम लोग चलाते. We do not take the money from them till the day उनको काम नहीं मिलता है. जो काम मिलता है वी ऑलवेज रिक्वेस्ट देम कि प्लीज कम एंड री-रजिस्टर एंड गेट योर अकाउंट एक्टिवेटेड. तो मैम लेट मी मेक माई सेल्फ क्लियर एक चीज के लिए, जो आप वेब पेज रजिस्ट्रेशन के पैसे लेते हैं जी, is not for you. You are taking it to give it to somebody else. No, that is the biggest problem. A lot of people have this misconception because of this so-called registration that is moving in the industry. Oh. It is definitely not the money which is coming in my pocket. I'm getting my money which is in the pocket from my production houses, which is enough for me. Okay. And for my team. Out of that, let me tell you this also, ki 800 rupees goes to the web page, 200 we definitely hold back. We hold back because we have to do a lot of per actor there's a lot of overheads. Yeah. Like कभी बल्ब चला जाता है, कभी ये होता है, कभी वो होता है. There's a lot of overhead expenses. बहुत बढ़िया बातें हुई है. अच्छा मैम ने जो बात कही ऑडिशंस कैसे देने हैं, मैं ये बात उनसे पूछना चाहता हूँ.